Hello everyone, good afternoon. I hope you are fine. Today we are starting with our next class of the next unit of the rotational motion. Then yesterday we discussed about their moment of inertia, how we can find there that moment of the radius of the particle that is rotating in a rotational motion. Okay, so today we will discuss about the relation between some linear and linear and angular quantities. If we are talking about their in linear motion, then their displacement will be act there. अगर linear में कोई body move करी, for example, we are taking this object and linearly moving with some displacement, then some path, then we can say their s displacement will be covered by this object, path covered by this object, then we can say displacement and distance. Okay, same thing, this object will start rotating. ऐसे कोई object है, अगर ये circular motion में अगर rotate कर रहा है like this one along a fixed axis, then this type of the motion we can say there that is a rotational motion. ओके तो यही जो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सभी टर्म्स जो है हमने में पढ़ी थी, वही सभी टर्म क्या हम एंगल में पढ़ेंगे. कि हमने स्टार्टिंग में मैकेनिक्स में क्या पढ़ा था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, force, work done, then these we have discussed beta in linear motion. Same all these factors we will learn in our rotational motion. की बॉडी अगर सीधा ना चल के, प्लेन पे ना चल के क्या कर रही है, फिक्स एक्सिस के लोग रोटेट करती है. So how much change in the velocity, how much change in the displacement of the body, then how much acceleration, linear momentum will be changed into angular momentum. कि बॉडी अगर रोटेट करेगी रोटेशनल फॉर्म में, then this linear momentum will be converted into angular momentum. So we will discuss today about these relation between linear and angular. Linear अगर है तो उसको angular में कैसे convert करते हैं, और angular अगर relation given है किसी quantity का तो उसको linear में कैसे change करेंगे. So first we are starting our from the angular displacement. Displacement से हम start कर रहे हैं. So any body is here, then displacing angular momentum. एंगुलर जो पाथ है, रोटेशनल जो पाथ है वो कवर कर रही है along the fixed axis. So how much path will be covered by this one body? Let here this one will be measurement of this side. The let we are taking their theta. यहाँ से यहाँ बॉडी यहाँ से चली यहाँ पहुंच गई तो कितना डिस्प्लेस हुआ, that we will call it theta. Okay, if this one length of this arc we are taking L length of this one arc, then OPQ we can write there. Okay, if this one will be R is a radius of this one, so angular displacement we can say in triangle OPQ. So we know about this one in form of the angular form, then we know about this theta equal to arc upon our radius. ये relation हमें पता होता है, theta equal to arc upon radius. If any body is moving in a circular motion, then we can write there in form of the theta arc by radius. So here we are assuming this arc will be equal to length L. We are assuming this one radius of this circular path that we are assuming there R. So here we can write there theta equal to here L by R. ओके अगर आप S लेके चल रहे हो, X लेके चल रहे हो, कुछ भी लेके चल सकते हो, whatever your choice. So here we can write there this one can be X, can be S, whatever. So S we are writing there, then S we can write there theta equal to S equal to theta R. इसको इधर लेके जाएंगे then it will be multiple. So theta equal to here S equal to theta R. This is the relation we can say linear and angular displacement. ये क्या होगी आपकी linear displacement S, linear displacement, and this one theta will be our angular displacement. Angular displacement. This is our first relation between linear and angular displacement in form of the rotation. We can write there S equal to theta R. Okay, so by using this one here we can write there. Now after that we can write their relation
एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, अगर बॉडी यहाँ से यहाँ चल रही है, दैट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सो वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय दिस बॉडी ड्यूरिंग रोटेशनल सर्कुलर पाथ अलोंग दिस फिक्स एक्सिस, दैट वेलोसिटी वी विल कॉल इट एंगुलर वेलोसिटी. Okay, so angular velocity, how we can find this one? Angular velocity, angular velocity, angular velocity we can write like this one. So how we can write this one angular velocity? We know about this one. angular velocity को हम डिनोट करते हैं बेटा थीटा लेटर ओमेगा लेटर से, v equal to our omega r. This is the relation between them, v equal to omega r. Relation v is our linear velocity and omega will be our angular velocity, and r is the परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, जिस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, और जहां तक रोटेट कर रही है, अगर बॉडी यहाँ है इस एक्सिस के अलोंग बॉडी रोटेट कर रही है, दैट इज विद योर ओमेगा, ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी के साथ, तो दिस वन आवर आर. ओके, इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर. व्हाट इज आर? आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन अप टू दैट ऑब्जेक्ट. सो हियर वी कैन राइट देयर v इक्वल टू आवर ओमेगा आर. So how we can write this one? We know about this one, our instantaneous velocity we discussed there. Then ds by dt, yes ना, मैकेनिक्स में हमने स्टार्टिंग में लीनियर मोशन में हमें पढ़ा था v इक्वल टू ds by dt. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी. सो यही हम यूज कर रहे हैं. अब हमने क्या निकाला था? s निकाला था इन फॉर्म ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा r. सो v कैन राइट देयर d by dt. s की वैल्यू हम इधर से पुट कर सकते हैं इफ नीड देयर इन फॉर्म ऑफ द एंगुलर. एंगुलर की फॉर्म में रिलेशन निकालने के लिए कन्वर्ट दिस वन लीनियर वेलोसिटी इन एंगुलर थीटा r. Here we are writing there theta r. So after this one, here we can write there v equal to r. We can write there as it is, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है? r तो क्या रहेगा इस पाथ के अलोंग? कांस्टेंट रहेगा. बॉडी यहाँ से यहाँ रोटेट कर रही है तो r रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस पाथ. ओनली थीटा विल बी चेंज. इनिशियली थीटा ये है, जैसे बॉडी यहाँ पहुंचेगी थीटा वेरी करेगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा इंक्रीज कर गया. बॉडी फिर से यहाँ पहुंची, थीटा फिर से वेरी कर गया. तो किस में वेरिएशन हो रही है बेटा? थीटा में वेरिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, जो चीज वेरी करे उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे? उसका डिफरेंशिएट कर देंगे. सो हियर वी कैन राइट देयर v इक्वल टू r. वी कैन टेक आउट, देन हियर वी कैन राइट देयर d थीटा बाय dt. सो हियर d थीटा बाय dt, rate of change of angular displacement, then we will call it angular velocity. क्लियर? लीनियर से कंपेयर करें, जस्ट लीनियर में जैसे होता है वैसा ही रिलेशन आपके एंगुलर में बनेंगे. सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? पाथ चेंज हो रहा है. उसके अंदर बॉडी क्या प्लेन पे मूव करती है, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, और इस टाइम बॉडी क्या करती है? रोटेट करती है. बॉडी का हर एक पार्टिकल क्या है? फिक्स एक्सिस के अलोंग क्या करता है? रोटेट करता है. सो योर मोशन विल बी चेंज अलोंग दिस रोटेशनल, दैट वी विल कॉल इट एंगुलर. ओके, सो हियर वी कैन राइट देयर d थीटा बाय dt. सो हियर रेट ऑफ change of angular displacement we will call it angular velocity. So here we can write there v equal to here r as it is, then here d theta by dt we can write there angular velocity, और angular velocity के लिए जो symbol होगा हमारे पास क्या होगा? v equal to r omega. I hope you understood. So after this one angular velocity, then next will be your angular acceleration. Angular acceleration भी same इसी तरीके से निकल के आएगा. अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ओके, हियर एंगुलर एक्सेलरेशन as we know about this one, linear acceleration will be equal to rate of change of velocity with respect to time. Then we can write their acceleration, instantaneous acceleration. ये दो रिलेशन हमने क्या था सेकंड यूनिट में रीड कर रखे हैं वेक्टर्स में एंड देयर मोशन में. ओके, स्ट्रेट लॉज मोशन. देन हियर v इक्वल टू ds by dt एंड एक्सेलरेशन वी कैन राइट देयर चेंज ऑफ वेलोसिटी per unit time, then we can write their acceleration. So a equal to dv by dt. Now here v in form of the angular velocity we can write there r omega. Put value of velocity here, then take differentiation, then our angular acceleration relation will become in form of the linear acceleration. So here after putting this one a equal to d by dt, then here v we can write there r omega.
आर ओमेगा, आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आर तो कांस्टेंट इस पाथ के अलोंग, पाथ के अलोंग कहीं भी जा रहे हैं आर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, सिर्फ वेरिएशन किसके अंदर हो रही है, थीटा के अंदर, और थीटा के अलोंग वेलोसिटी पे डिपेंड करके क्या निकाला था हमने, ओमेगा निकाला था. सो हियर वी विल राइट देयर ओमेगा विल बी चेंजेबल वेरिएबल, रिमेनिंग टर्म्स विल बी कांस्टेंट्स, दैट्स व्हाई r will be take out from the differentiation, then here differentiation of omega will be there. So d omega by dt we can write there, here acceleration we can write there a equal to here r, and here d omega by dt, this one we can write there angular acceleration, और angular acceleration का symbol क्या होता है, alpha. Okay, this one our alpha, d omega by dt equal to our angular acceleration, and symbol of angular acceleration is our alpha. So this is the relation between linear acceleration and angular acceleration, a equal to r alpha. I hope you understood better relation between them. One is first one relation we discussed there, linear displacement, angular displacement, s equal to theta r. Next relation, linear velocity, angular velocity, v equal to omega r. Next relation between linear acceleration and angular acceleration, so here we can write there a equal to alpha r. This is the relation between angular and linear. So next we will discuss better equation of motion between for the angular motion. Equation of motion for angular motion. Equation of motion we will discuss. So first हमने find किया है relation between here linear displacement, angular displacement, s equal to our theta r. Next one for the velocity, v equal to omega r. Next, a equal to alpha r. Alpha is our angular acceleration. So after that, here equation of motion, first equation we can write there v equal to u plus at. Next equation, s equal to ut plus half at square, and third one equation v square minus u square equal to 2as. These are the three equation of motion which discussed already in the linear motion when body will be on the plane. तो इन्हीं को क्या है एंगुलर में चेंज करना है, कि हमने क्या था लीनियर के लिए लीनियर के एंगुलर में चेंज किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन. तो इन्हीं को यूज करते हुए अगर बॉडी रोटेट कर रही है रोटेशनल मोशन में, तो इक्वेशन इन तीनों को मर्ज करके हमारे पास जो इक्वेशन आती है जिनको हम इक्वेशन मोशन कहते हैं, तो एंगुलर फॉर्म में हाउ वी कैन राइट दिस वन. सो हियर इन फॉर्म ऑफ दिस वन, इन एंगुलर फॉर्म हाउ वी कैन राइट इन एंगुलर मोशन, first equation, convert this one first equation v equal to final velocity, then final velocity in angular final velocity omega equal to initial velocity, u क्या हमारे पास initial velocity, so initial angular velocity we will use there omega naught. This is the symbol of the initial angular velocity plus at. A is linear acceleration, as we will convert into angular acceleration, so here we will use our alpha. What? Alpha. Done now already, alpha, and t is time, so here t we will write as it is. Now for the second of equation of motion, s equal to ut plus half at square. So convert this one in angular motion. S is a linear displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे, थीटा. सो कन्वर्ट दिस वन एस इनटू थीटा. राइट हियर थीटा इक्वल टू ut plus half at square. U will be there initial velocity, convert into angular velocity, then it will be there omega naught, and t is time as it is, plus 1 by 2, and for the
linear acceleration converting into your angular acceleration, then here we will use alpha and t square. Now after that, third equation will be there, v square minus u square equal to 2s. V will be final velocity, final angular velocity minus initial angular velocity equal to 2 alpha, and s will be again our angular displacement theta. Okay, so here we can write there, where symbols we are writing here, omega equal to final angular velocity, omega naught initial angular velocity. Next our theta will be angular displacement. What? Theta will be angular displacement. Alpha will be angular acceleration. These are the different terms which we are using in our angular equation of motion. So this equation of motion is a telling relation between velocity, angular displacement, angular acceleration. I hope you understood how we can apply this one, and these are the came from by using our these terms, and some are the instantaneous velocity and instantaneous acceleration. So here we can write there v equal to, by using these terms, v equal to ds by dt, and here another one a equal to our v by dt, and in form of the angular, then these terms we can write there omega equal to d theta by dt. Same, you want to convert this one in form of the angular, so alpha equal to our d omega by dt. Like this one we can apply these terms. Now next will be their relation between linear momentum and angular momentum. लीनियर मोमेंटम के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उस सिंबल को क्या कहते हैं? P. Already we discussed P, angular momentum, and linear momentum. Angular के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है that will be capital L. Okay, and relation between them will be L equal to R cross P. Okay, this